Hey guys, so let's discuss today Chamberlain's theories of collective bargaining. So in the coming days, I would be focusing upon collective bargaining. Okay, the topics related to collective bargaining. So yes, you can also follow my Telegram page with the name HR with Sanchita. Okay, in which you will get all the links related to various classes that I've conducted on various platforms. सो वी नो व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होते हैं लेबर और जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ठीक है वो बार्गेन करते हैं चीजों से रिलेटेड जो भी मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हैं काम से रिलेटेड चीजें हैं ठीक है उससे रिलेटेड बार्गेनिंग की जाती है collective bargaining में. Now Chamberlain has given various theories of collective bargaining. So the first theory that we are going to discuss is marketing theory. Okay, now the matter I have referred from PR and Sinha because that is it is called a very important book for industrial relations. आप उसको consult कर सकते हैं industrial relations के लिए if you're studying for any exam, so you can consult that book. Okay, it has most of the things that are asked in the exams, PR and Sinha, and this is not an advertisement. I'm just telling you my views that is the best book and this is वहां से ही मैंने रेफर किया. So let's study the first theory, that is the marketing theory. So the marketing theory views collective bargaining as a means of contracting the sale of labor. According to this approach, collective bargaining may be viewed as the process which determines under what terms labor will continue to be supplied to a company by its existing employees and by those newly hired as well. Okay, so these are the exact lines that I've taken from the book. ओके एंड यू शुड नो द एग्जैक्ट लाइंस ऑल्सो. आप ऐसे मत सोचियो कि हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे क्योंकि कई बार रिजर्वेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यू शुड नो और वो ना एग्जैक्ट उन्होंने बुक से लाइन उठाई होती है. ओके, सो यू शुड नो दैट व्हाट दिस मार्केटिंग थ्योरी इज सेइंग. तो सबसे पहले मार्केटिंग थ्योरी क्या होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है. इट इज अ मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द सेल ऑफ लेबर. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है मार्केटिंग थ्योरी में, दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या डिटरमिन करती है कि under what terms labor will continue to be supplied to a company by its existing employees. ठीक है, तो जो workers हैं किन कंडीशंस पे और किन टर्म्स पे अपना लेबर सप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को. तो इन चीजों से रिलेटेड, इन कंडीशन से रिलेटेड, इन टर्म्स से रिलेटेड मार्केटिंग थ्योरी में कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है. अगेन लेट्स रीड द सेकंड पैराग्राफ, दैट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कलेक्टिव बार्गेनिंग मे बी व्यूड एज द प्रोसेस which determines under what terms labor will continue to be supplied to the company by its existing employees. So इसमें क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या डिसाइड होता है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेबर अपना लेबर सप्लाई करेगा. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, यस, हाँ, द एग्जिस्टिंग लेबर एज वेल एंड द न्यूली हायर्ड, जो भी न्यू आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो भी किन टर्म्स और कंडीशंस पे अपना लेबर सप्लाई करेंगे. ओके, ऑर्गेनाइजेशन को, वो सब इस मार्केटिंग थ्योरी में डिसाइड होता है. Now let's see another points also of this marketing theory which will make you clearly understand the concept. The view is strengthened by the fact that money exchange is basically involved in the contract resulting from collective bargaining. तो जो ये contracting, ये जो क्या होता है कि यहाँ पे आपने पीछे पढ़ा, ठीक है, कि it contracts the sale of labor. तो अब इस contract में क्या होता है, यहाँ पे क्या money exchange involved होता है. The view is strengthened by the fact that money exchange is basically involved in the contract resulting from collective bargaining. तभी तो ये marketing theory है. तो इसमें मे बी मनी से रिलेटेड कंडीशंस भी डिसाइड होती होंगी. When we are talking about the terms and conditions, so money would also come, right? Now, when there is no agreement on the price of labor, no sale can be expected. Employees continue to sell their labor only on terms determined collectively. जैसे कि मैंने आपको पिछले में बोला था कि मार्केटिंग थ्योरी में टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू लेबर डिसाइड होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट आता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में मनी का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, और मनी क्या होता है यहाँ पे, प्राइस ऑफ लेबर. ठीक है, कि अगर लेबर अपना लेबर सप्लाई कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्राइस पे कर रही है, व्हाट प्राइस द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग. ओके, सो दैट इज व्हाई इन द सेकंड पैराग्राफ इट इज रिटन दैट व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द प्राइस ऑफ लेबर नो सेल कैन बी एक्सपेक्टेड. ठीक है, आप ही खुद बताइए, आप अगर किसी चीज को लेने गए हैं, यू हैव गॉन टू परचेज अ स्टडी टेबल, ओके, फ्रॉम अ फर्नीचर शॉप, तो फर्नीचर शॉप भी कुछ प्राइस बोलेगी, आप भी बोलोगे, आपके बीच में बार्गेनिंग होगी. ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा प्राइस से रिलेटेड तो सेल तो स्टडी टेबल की हो ही नहीं सकती है. द स्टडी टेबल कैन नॉट बी सोल्ड, right? For example, if the furniture wala is telling you that the
the study table is of 10,000 and you are saying no, you want 8,000. Okay, so can the अब फर्नीचर वाला बोल सकते हैं कि 10,000 में मैंने सेल कर दिया? No, you have to agree at a price, you have to come at an agreement. For example, आप बोलते हैं चलो 9,000 में दे दीजिए, फिर वो भी बोलता है हाँ 9,000 is ठीक, तो आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग किया, आप 9,000 प्राइस पे आ गए, right? You have come at an agreement, so then the sale can be made. But if the agreement is not there related to the price, okay, of labor, so then the sale cannot be expected. वैसे ही लेबर भी बार्गेन करेगा, मुझे 10,000 सैलरी चाहिए, 15,000 सैलरी चाहिए, फिर मैनेजमेंट भी वो क्या देना चाहता है, अगर मैनेजमेंट भी मान जाएगा हाँ मैं आपको 13,000 दे दूंगा, क्या आप 13 पे मानते हैं, तो लेबर बोलेगा हाँ मैं 13 पे मान जाता हूँ. So then there would be an agreement. But if there would be no agreement on the price of labor, ठीक है, तब फिर सेल हो नहीं पाएगी. Okay, now employees continue to sell their labor only on terms determined collectively. So this we know. The marketing theory of labor may take into account the differences in quality of labor to be sold and the extent of demand for particular types of labor services. Okay. Now, आप देखिए जो हम ये प्राइस की बात कर रहे थे लेबर की, ठीक है, ठीक है. सो अब ये क्या बोलते हैं, द मार्केटिंग थ्योरी ऑफ लेबर मे टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंसेस इन क्वालिटी ऑफ लेबर टू बी सोल्ड एंड द एक्सटेंट ऑफ डिमांड फॉर पर्टिकुलर टाइप्स. ठीक है, अब देखो आप ये भी देखोगे कि क्वालिटी क्या है लेबर की, ठीक है, राइट. तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही प्राइस मिलेगा, उस लेबर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग और डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसे प्राइस मिलेगा, है ना. जो मतलब कि लेस पाए जाते हैं मार्केट में उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दे आर स्कैर्स, ठीक है. जो बहुत ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल होंगे तो उनको प्राइस कम दी जाएगी बिकॉज देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट अ कंपनी हैज. Now, as in commodity markets, so also in labor market, labor services of good quality fetch higher prices than those of inferior quality. अब ये तो आपको पता ही है कि जो लेबर हाई क्वालिटी का होता है उसको हायर प्राइस दिया जाएगा, हायर सैलरी दिया जाएगा, ओके. और जो इंफीरियर क्वालिटी का लेबर है उसे कम सैलरी दी जाएगी. जो कम स्किल्ड होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, देन दे आर पेड लेस, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज हु आर रियली एजुकेटेड एंड दोज हु हैव स्किल्स in them. Okay, so this is what it is said. Now let's talk about the second theory that has also been given by Chamberlain, that is the governmental theory. Okay, government से आपके दिमाग में आता है constitution, right? Now let's read the pointers, then you will better understand that what is the governmental theory. The governmental theory of collective bargaining considers collective agreement as a constitution. तो यहाँ पे collective bargaining को, collective agreement को क्या बोला गया है? A constitution. Okay, on the basis of which a sort of industrial government is established in the enterprise, company or industry. Remember it that in the governmental theory of collective bargaining, we view collective agreement as a constitution. एक constitution की तरह आपने view किया collective agreement को, ठीक है. और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे क्या एस्टैब्लिश हो रहा है? उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश, इंडस्ट्री में जो गवर्नमेंट है दैट इज एस्टैब्लिश, ठीक है. नाउ the industrial constitution is established by joint conference of the union and management representatives. अब देखो we saw that this collective bargaining is a constitution or collective agreement is a constitution, and on the basis of that constitution government is established. Now you know India is also a constitution, India का भी constitution है और उस constitution के basis पे हमारी government establish होती है, various laws come into the picture, right? अब ये कैसे होता है ना? हाउ इज दिस इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द यूनियन एंड मैनेजमेंट. तो यूनियन एंड मैनेजमेंट सिट टुगेदर एंड देन दे एस्टैब्लिश दिस इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूशन. तभी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की ये थ्योरी है. अगर अकेले ही यूनियन एस्टैब्लिश करेगी या अकेले ही मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करेगा, देन इट कैन नॉट बी कलेक्टिव बार्गेनिंग, बिकॉज कलेक्टिव बार्गेनिंग इज समथिंग दैट इज डन कलेक्टिवली, okay, by the union and by the management representatives. Now, the result of these conferences is contracting of an agreement, whether written or oral understanding. तो इन conferences से क्या आता है? हमारा एक agreement बन जाता है क्योंकि दोनों parties bargain करती हैं and they come to an agreement. Okay, so whether these agreement are established as a written understanding or they are established as an oral understanding. ठीक है, या तो written agreement बन जाता है या orally agree कर लेती है both the parties. Okay.
The principal function of the constitution is to establish organs of the government, specify them and provide agencies for making, executing and interpreting rules and the manner of their enforcement. अब आप if you talk about a country, ठीक है, तो constitution का main focus as I told you क्या होता है कि आपकी government establish होगी, various organ establish होंगे, उस constitution के basis पे हम constitution के against तो नहीं जाएंगे, ठीक है, whatever the Indian constitution is there. Then on the basis of the constitution we also make some rules, we also make some laws, codes, okay, right, and some rules and regulations are made. तो वैसे ही जब हमारे organization में भी establish होता है constitution, then उससे हमें क्या आता है, so it specifies and provides agencies for making, executing and interpreting rules. Rules बनाए जाते हैं, they are executed and they are interpreted, that whether they are good or not, okay, और उन्हें कैसे enforce करेंगे, in what manner would we enforce those rules, okay. So this is all about the governmental theory. I hope it is clear. Now let's study this third theory of Chamberlain, that is the managerial theory. Okay, so you know this you need to see it again and again also. एक बार आप फिर भी revise कीजिएगा इसके बाद, class के बाद you have to revise it again, okay, because if you just watch it one time then ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, okay. जिनका बैठ गया that is very good, but watch it once more or two more times so that you have a expertise over this thing, and this is very important, I'm telling you. Now let's talk about the managerial theory. The managerial theory of collective bargaining views collective bargaining as a method of management. Now here if we are talking about the managerial theory, so managerial से manager से हमारे दिमाग में what comes into the our mind? Management. Okay, so the managerial theory of collective bargaining views collective bargaining as a method of management. In every institution or organization, some form of management is necessary. So see, management is necessary in every institution or any form. Even in a family, management is necessary. Even in a school, management is necessary. So management is not just limited to these organizations. Okay, wherever there is an institution, wherever there is an organization, some form of management is there. Okay, in industrial organizations, in regard to both the method of management and procedures for making decisions, collective bargaining establishes joint or group management. तो देखिए यहाँ पे managerial theory क्या बोल रही है चैम्बरलेन की, that collective bargaining establishes joint or group management. Joint management, obviously you know कि workers and management are coming together and they are managing things, right? So that is why here collective bargaining establishes joint or group management. Now let's come to the next pointers that are very important related to this management theory, managerial theory. So collective bargaining by its nature involves the union's representatives in the managerial role. ठीक है, तो collective bargaining से क्या होता है कि union के representatives भी एक managerial role करते हैं. Okay, so they also become a part of the managerial role. Okay, so they may not look upon themselves as manager, but the effect of their actions drive them to such a role. अब देखिए, अब हम we are not saying this thing that the unions have become the manager, क्योंकि manager जो management है उसका role तो है ही management का, ठीक है. We are not saying this thing that now the union members have become managers. We are not saying this, okay, but it is said here that collective bargaining involves the union representatives in a managerial role. अब देखो यहाँ पे ये बोला गया है third line में that the managerial theory does not assert that collective bargaining usurps managerial functions from the management. यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि जो union ने है वो managerial role छीन लिया है management से. Okay, it is not saying that. Okay, it simply asserts that it has become one method of management in which the area of application extends to only those matters in which the unions have secured a voice. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वो कुछ मैनेजमेंट कर लेते हैं related to their matters. तो union के members would do some amount of management which is related to their matters where they have a permission to voice their opinions, okay, or where they have secured a voice. ठीक है, so they are doing management related to their matters. So union are doing management related to their matters. ठीक है, so they are not snatching away the managerial function from the management. वो अपने matters से related management कर रहे हैं. Clear? Now there's a term that is called directive management जो कि आगे वाली slides में आएगा. So you should know that what is the directive management. So the apex
person or body in management hierarchy in which final authority is vested, such as the owner in small businesses and board of directors and corporations. So basically, directive management is the highest level of management, which has really great importance. Apex body, apex person. Okay, you can say the apex, highest level body, the most important body, the most important person. Okay, the apex person or body in management hierarchy in which final authority is vested. ठीक है, जिसके पास final authority होती है. Okay, apex person, apex body who has the final authority. Okay, so it can include the owner in small businesses. अगर आप small businesses की बात करें तो वहां पे owner होंगे. And if you talk about the large scale businesses, then the directors. Okay, you can see that the उन corporations के जो directors हैं, they are called the directive management. I hope it is clear. Now, yes, again we are talking about the managerial theory only. अब देखो, the managerial theory of collective bargaining poses a sharing of directive management. As I told you, management भी करते हैं union के members managerial theory में, ठीक है, अपने matters से related. They are not snatching away the function, but जहाँ पे वो अपना opinion voice कर सकते हैं, वहां से related they are doing the management. So collective bargaining poses a sharing of directive management. Okay, so in collective bargaining, union representatives meet the representatives of the owners to reach joint decisions. So here in collective bargaining, obviously union representatives किनसे मिलते हैं? They meet the representatives of owners to reach joint decisions, which are incorporated in a written agreement and which cannot be overruled or rescinded for the period of the agreement except by another joint conference possessing similar authority. तो यहाँ पे भी हम agreement में आते हैं, ठीक है, और जो भी हमने पीरियड एग्री किया हो कि हम इतने से इतने टाइम तक ये चीजों को करेंगे, ठीक है, तो हमें उन चीजों को करना ही होगा. ओके, अनलेस एंड अनटिल एक और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ना हो जाए उस चीज को हटाने के लिए या एक नया एग्रीमेंट ना आ जाए. Okay, neither the union representatives nor the representatives of the owners have the power to modify its terms. ठीक है, जब हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, okay, neither the union representatives nor the representatives of the owners have the power to modify its terms. These can be changed or modified only by mutual agreement of the two group of representatives. तो देखो, अकेले कोई भी modify नहीं कर सकता है terms को, ठीक है, a sole person or a sole group cannot modify the terms. Okay, the terms and conditions of the agreement can only be modified by the mutual agreement. ठीक है, मतलब mutual agreement किसका? Owners का और हमारे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का. तो अगर आपको चेंज करने हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट के, देन यू हैव टू कम एट म्यूचुअल एग्रीमेंट. ओके, यस, सो दिस इज द मैनेजरियल थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. आई होप इट इज क्लियर. ग्रेट.